सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कौन सा हिंदी? This is the 134. ये अब स्क्रीन पे पूरा है 134. So let us come to the another part. It was Enlargement Act. ये है. Now we are moving to third one. Third is CrPC. Criminal Procedure Code. $379 ना? 379.
379. So now point is this. What is the differences among them? ये सीआरपीसी कब का है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव मोड में आते हैं। 73. सो ये 73 का है। और ये इनलार्जमेंट एक्ट कब का है? 7. ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 134 का जो 1950. पार्ट है और ये 70 का एक्ट है। इससे पहले 1898 हुआ करती थी सीआरपीसी. एग्जैक्टली। तो पहला डिफरेंस यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक्ट ऑफ 92 सॉरी एक्ट नंबर 28 of 1970, which is talking about the Supreme Court under bracket Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction 1970 Act. It was enacted on 9th August 1970 और इसके अंदर ये क्लाउज इंसर्ट किया गया. दिस इज द वन एंड ओनली थिंग which is addition to this particular part 134 appellate matter and jurisdiction, and which is talking about especially बहुत ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं. An appeal shall lie to the Supreme Court. This is concerned to the appeal. An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order, or sentence in a criminal proceedings of High Court in a territory of India. There are three conditions, especially 1 and 2, has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentence him to death. So this is only confined to the death. Here is also sentence him to death. Here is again sentence him to death. But once we are talking about this Enlargement Act, the things are sentence him to what? Imprisonment of life or to imprisonment for a period of not less than 10 years. Here is again sentence him to imprisonment for life or to imprisonment for a period of not less than 10 years. And if I'm coming to the CrPC, which came later on, इन दोनों के बाद ये आया है, वहाँ especially this 379 was inserted, which is the union of these two, where the High Court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person or convict him and sentenced him to death or to imprisonment for life or
to imprisonment for terms of less than 10 years or more, he may appeal to the Supreme Court. बताइए डिफरेंस क्या है? 420 is a bit more wider. Which one? 420. The 379, which is 420 now. Much wider to whom? With respect to Then whom? the 1970 Supreme Court Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction and 134 of the Supreme Court rules, 134 of the Constitution. Sorry. This is nothing but the combination of these two. Yeah. This is nothing but the combination of these two. That's it. 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है, 1970 के अंदर पार्लियामेंट फील करती है कि एम्पावर किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को, और सेक्शन इनलार्जमेंट एक्ट लेकर आती है, और 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिवैम्प करती है। तो उसके अंदर दोनों के कॉम्बिनेशन को डेवलप करके दे देती है इन द फॉर्म ऑफ 379। दैट्स इट। और तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। बताइए। What is the more changes is here? However, the first two was little bit more elaborated. Elaborated in the sense of what? अब जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूं इन दोनों को। सबसे पहले मैं पिकअप कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो क्लाउज हैं, ए एंड बी। See, there are various conditions. There are various conditions in this article. Let us examine again the entire condition, and then I will focus on the one condition only. पहले मैं compare कर लूं, then I'll come back on the complete part. Just think about A. Has on appeal reversed what? An order of acquittal. Come to this particular part, Section 2 Enlargement Act, and see the A. Has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person. This is the first condition of this particular clause. And thereafter is and then sentence him to imprisonment for life. Here is again the same identical things are there. Has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person. Has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person. Has on appeal reversed an order of an acquittal of an accused person. Does this not identically taken from Article 134 into the Section 30? Section 7, sorry, Section 2 of the Enlargement Act. Full stop comma तक word count कर लीजिए. Has on appeal
reversed an order of acquittal of an accused. So this condition is identical in both the parts, isn't it? Identically. What is the difference? One, Even though they already discussed without prejudice the power conferred on the Supreme Court by clause 1 of Article 134 of the Constitution. And appeal shall lie to the Supreme Court. So this is a syncing with the Article 134. So main part is the Article 134, which is talking about the death. They extended from death to life as well as up to 10 years of sentence. The condition is reversal from acquittal, fixed. रिवर्सल दो तरीके से हो सकता है. वन इज कन्विक्शन टू एक्विटल या फिर एक्विटल टू कन्विक्शन. दे आर टॉकिंग ओनली वन वे, acquittal to conviction. They are not talking about conviction to acquittal, isn't it? साफ सुथरा तरीके से यहां ये कहा जा रहा है कि यदि किसी को ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया, एक्विट कर दिया, और हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया एंड सेंटेंस अवार्ड किया, तो फर्स्ट टाइम कन्विक्शन अवार्डेड बाय द हाई कोर्ट. और यदि ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल कर दिया, सॉरी कन्विक्शन दे दिया और हाई कोर्ट ने उसको एक्विटल कर दिया, no need to come to the Supreme Court. Getting my point? After punishment is the important part. After punishment, after sentence, after conviction, of course, conviction of up to 10 years, including life and death. यदि ये कंडीशन आता है by the High Court, it's not a concurrent finding. आप जरा फिर से एक चीज को नोटिस कीजिए, ये कंडीशन को क्लैरिफाई करना और कंफ्यूजन को दूर करना ज्यादा जरूरी है. उससे पहले मैं एक चीज जरा दिखाता हूँ, ये टेबल आप देखिए. Is this visible to all of you? विजिबल बट सारा शायद पढ़ ना पाए, छोटा स्क्रीन. राजीव जी, इसका फोटो खींच के अगर ग्रुप में भेज दिया जाएगा तो और इजी हो जाएगा सबको. अरे ग्रुप में तो बाद में, पहले मैं स्क्रीन पे ले लूं फोटो खींच करके. मैं समझ गया, सारे लोग पता नहीं मिस करेंगे इसको. मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं. देयर आर अ टेबल. ये एक टेबल है जो, और 5 स्टेप्स है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ AoR एग्जामिनेशन. इसको मैं थोड़ा सा एक बार एक पेज में मैंने ये किया हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था. दैट आई विल डू राइट नाउ, अभी मैं करूंगा. उसके अंदर ये सारी बातें हैं जो मैंने अप्लाई करनी है. हालांकि इसका मोरल वही है जो वहां पर मैं लैंड अप करने वाला हूँ. आज का थोड़ा सा वो स्पेशल पार्ट होने जा रहा है. कहानी कुल मिलाकर के एक ही है कि कैसे हम सारे कंडीशन को कैप्चर करें और कंफ्यूजन को दूर करें.
इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए ध्यान से। बिल्कुल 134 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी सेंस में आप इसको ये पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट ट्रायल कैसे कर सकते हैं। और जस्ट लेट अस थिंक अबाउट ऑल द कंडीशंस अवेलेबल। जितने कंडीशंस आपके पास अवेलेबल हैं, कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, वो आप जरा चेक। ट्रायल कोर्ट क्या करेगा? या तो कन्विक्शन एंड सेंटेंस या एक्विटल। ट्रायल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बिलो, ट्रायल कोर्ट ही बोलूंगा यहाँ पे। और हाई कोर्ट क्या कर सकता है? ऑन अपील, मतलब जो अवार्ड हो गया उसका ही अपील होगा। पहली बात, नंबर 1, चूंकि यहाँ स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होता है, who will go and appeal? Either state State or accused. स्टेट यूजुअली अपील में नहीं जाती है। एक लिमिटेड कंडीशन है जहां पे स्टेट अपील में मूव करे। एक थर्ड पार्टी और भी है, और वो है कंप्लेनेंट और एक्यूज। दे कैन ऑल्सो मूव टू द अपील, क्योंकि इज अ विक्टिम। कंप्लेनेंट एंड विक्टिम, सॉरी, नॉट एक्यूज। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये दो स्टेट है बाय द ट्रायल कोर्ट, एक्विटल और कन्विक्शन। कन्विक्शन कम्स विद द सेंटेंस। हाई कोर्ट क्या करेगी? पहले कंडीशन पे दो ऑप्शन है हाई कोर्ट के पास। यदि एक्विटल है बाय द ट्रायल कोर्ट, तो या तो एक्विटल को कंटिन्यू करेगी या रिवर्स करेगी। और दूसरा कंडीशन है कन्विक्शन का, तो या तो कन्विक्शन को कंटिन्यू करेगी या रिवर्स करेगी। तो हाई कोर्ट को दो पॉसिबिलिटी है रिवर्स करने की, और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचता है क्या? आप यदि अपने पेज पे वो टेबल बना दें, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, कन्विक्शन एंड रिवर्सल, तो 4 ही ऑप्शन आपको आएगा, 5वां ऑप्शन आएगा ही नहीं। ऑल पॉसिबल ऑप्शन आर 4, नॉट 5th। हियर दो ऑप्शन को रूल आउट कर दिया गया है, और दोनों ऑप्शन है वंस ट्रायल इज कन्विक्टेड, ड्यूरिंग ट्रायल accused is convicted and sentenced, या तो कंकरेंट फाइंडिंग टू द हाई कोर्ट हो या रिवर्सल हो। उस केस को ये डिस्कस ही नहीं करता, दोनों सेक्शन करता है क्या? टेल मी, इज इट देयर? द आंसर इज नो। Only they are talking about once trial court is acquitted, and high court is also acquitted, उसमें भी नहीं कहता है, उसके लिए भी नहीं है ये दोनों से। Only one option, reverse an order of acquittal on appeal। मतलब समझिए, अपील आया, पहले ट्रायल हुआ ट्रायल कोर्ट के अंदर, वहां एक्विटल हुआ, उसके लिए हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल हुआ, और ड्यूरिंग दोज अपील हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद उसको सेंटेंस दिया, कन्विक्शन एज वेल एज सेंटेंसिंग, वो भी सीरियस सेंटेंस। हाई कोर्ट कैन डू दैट और डिड। तब ये सेक्शन इन्वोक होगा। क्यों? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? क्योंकि आफ्टर कन्विक्शन उसको एक अपीलेट फोरम चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? एक्विटल के बाद आपको उतना जरूरत नहीं है,
बट कन्विक्शन के बाद एक एपलेट फोरम चाहिए. दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द सेक ऑफ फेयरनेस. यदि ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया यानी सेंटेंस कर दिया है तो हाई कोर्ट उसको कंसीडर करेगा. वन अपील इज एग्जॉस्टेड, मतलब अवॉर्डेड माने ग्रांटेड. लेकिन जब हाई कोर्ट उसको कन्विक्ट करेगा तो विच कोर्ट कैन गिव द अपील? इट इज द ओनली सुप्रीम कोर्ट. थिंक अबाउट द ऑब्जेक्टिव. वो उसको मिलेगा नहीं क्योंकि लास्ट कोर्ट तो हाई कोर्ट ही यूजुअली इन हायरार्की. सो सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए स्पेशल एपलेट का प्रोविजन है बाय वे ऑफ टू एक्ट which was developed up to 1970. It was the Enlargement Act as well as only one act, the Enlargement Act, otherwise the Article 134(1). In any manner, either in A or B, who is awarded the sentence? It is the High Court. Awarded, not confirmed or affirmed, only awarded. In both the conditions, the person was either acquitted by the trial court or trial is conducted by High Court itself. And awarded either life, death, and more than 10 years. Not less than 10 years. यहाँ भी एक केस है. One not less than 10 years means what? 10 years and more. 9 years, 364 days, it's not covered into them. There must be 365 days, 10 years. So 10 years not excluded, it is also included and more. Am I clear up to this point or not? Let us come to the CrPC. This is the Criminal Procedure Code. What they are talking about. Where the High Court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and convicted him and sentenced to death or to imprisonment for life or to imprisonment for a term not less than 10 years or more, he may appeal to the Supreme Court. Again, I'm coming back. Does this part is talking about 134 1B? The answer is no. They are only talking about A. Vansal Sahab, am I right or wrong? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. Because of that, here is the only one part on appeal. Which is outside the domain of withdrawal and trial. ट्रायल को विड्रॉ करके ट्रायल का जुरिडिक्शन सीआरपीसी में जब भी है सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर ही, हाई कोर्ट को नहीं. हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है. हाई कोर्ट उसको विड्रॉ कर सकता है अपने और ट्रायल कंडक्ट कर सकता है एज पर द सीआरपीसी. सो इफ I will talk about this B has withdrawn for trial before itself, or this B has withdrawn for trial before itself.
Does this condition is covered into them? I don't think so. When High Court has on appeal means withdrawal is gone. Condition is same, reversed, and order of acquittal. So trial court awarded acquittal. On appeal, High Court reversed that acquittal of the accused person and convicted him. उल्टा कर दिया, acquittal person को convict कर दिया and sentence him to death or to imprisonment of life or to imprisonment for terms of 10 years or more. All the condition which lies, then he may appeal to Supreme. कहा जा सकता है some sort of second appeal, but it is not the actually second appeal. It is given a first appeal to convicted. If trial court convicted, High Court first appeal done, no appeal is required. The High Court convicted, one appeal forum is required and Supreme Court should give. Otherwise, no appeal. But this is not covered on the withdrawal and trial. That's the difference between the 379 and that. So once withdrawal and then try and then awarded sentence, this section does not help you in any manner. In that condition, you have to look into this particular section once the life is given by the High Court or 10 years or more awarded by the High Court. Under this section 2B will help you as an appeal come before the Supreme Court. But the matter is not life or in between 10 years, only for the death. The only remedy is available to you. This is the B, 134B, 1B. Am I clear up to this point? Of course, this 379 is a combination of two parts. One part of the Constitution, which is this A, as well as the another is this A. But this is not talking about B, either in 134 as well as section 2. This is the comparison and complete analysis in respect to appeal lies to the Supreme Court, comparing three different statute provisions. Is there any more doubt? Please come, then I'll proceed further. If suppose in drafting, this particular question has been asked, this particular person on an appeal has been convicted for 10 years. So in that case, which sections we have to mention in our drafting? Either this article 134, section 2 or 379. See, ये लेटर ऑन डेवलपमेंट है. ये जो 379 है ना, 74 का 73 का डेवलपमेंट है. 70 में वो दोनों आ चुके थे और 50 में आ गया था, और वो भी इनकम्प्लीट है, मतलब हाफ ऑफ द पोर्शन जो भी आपको दिख रहा है. सो फॉर द सेक ऑफ सेफ एंड स्मार्ट अप्रोच, if death is there, constitutional provision is always superior than
the statutory provision. But the life is there. आप उसको कैसे दो तरीके से इन्वोक कर सकते हो, एक ही जगह तो इन्वोक करना होता है, ऊपर में अंडर सेक्शन जस्ट क्रिमिनल एपलेट जुरिडिक्शन। आप ये कह सकते हो आर्टिकल 134(1)(a) read with section 379 of CrPC और section 2 of the Enlargement Act read with this। या फिर आप एक काम कर लो, या तो 134 को इन्वोक कर लो या फिर 379 को इन्वोक कर लो, सेक्शन 2 इनलार्जमेंट को इन्वोक कर लो या फिर 379 को इन्वोक कर लो। किसी भी सूरत में ये गलत नहीं, ये दरअसल एग्जैक्टली ए पैरेलल कंकरेंट एपलेट प्रोविजन आपको मिल गया है। इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो और वहां दैट्स इट। दीज आर द प्रोसीजरल एंट्री पार्ट, नथिंग डिफरेंस। आप इसको इन्वोक करो, नो वन कैन से इट इज रॉन्ग, नो वन कैन से, because this is not a wrong, the enabled provision of law in force. Am I right or wrong, Bansal sir? 100% right. So सेफर साइट में हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, 134(1)(a) read with 370 of CrPC। क्या आप दोनों सेक्शन को इन्वोक कर लो, बीच में एंड लिख लो या और लिख लो, तब भी चलेगा, क्लियरिटी है, दोनों जगह वो अलाई करता है। बट समथिंग इज देयर, विड्रॉ एंड ट्राई वाला जो पार्ट है ना, वो यहाँ नहीं। पता नहीं बीएनएस में इसका करेक्शन हुआ है या नहीं, नहीं है। देखिए कितना केयरफुली लॉ डिजाइन होता है, यही चीज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। मुझे 2 मिनट टाइम और दीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपके साथ जरा शेयर करना चाह रहा था। 2 पेज है और वो दोनों पेज मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूं तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन। गिव मी जस्ट 2 मिनट टाइम, मैं अपना वीडियो को सिर्फ ऑफ कर रहा हूं। सिद्धि साहब आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं सर नथिंग। सर आने के बाद एक बार बोलिए आप थोड़ा लेट थे, अभी आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, पूछिए सर, थोड़ा सा हमारा जरा भी हो जाएगा, पूछिए। No, the word used in this 379 in certain cases, whereas 134 there is no question of in certain cases. So what are the in certain cases? Sometimes I can tell you, you have to read in certain cases, have to read in generality, not specifically. In generality means if suppose an appeal on reversal of an order of acquittal of an accused convicted into sentence to death or ally or 10 years or more, it is generality. In any case, it doesn't mean this is in we can say in certain case means a statute, not for specific act where they have prescribed this. In such cases, appeal will lie to the Supreme Court elsewhere. In certain means not including the special act, it is including the generality in general act.
If special act is TADA Act is there, assuming if TADA Act is there, although the TADA Act such type of conditions was there, generally the appeal was going to the Supreme Court. If suppose that was not there, then in that case, maybe in the High Court or Supreme Court, in 10 years or more like that. But that provision was not there. So that's why in generality. Yes, sir. Nayan Sahab, you have raised, yes, sir. Tell me. I just wanted to state जो ये ऊपर अभी हम हेडिंग्स पढ़ते हैं ना जिनको अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, इफ यू विल सी द ओल्ड एक्ट्स उस या ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये हेडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द साइड. दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द मार्जिनल नोट्स, ताकि आपको फाइन रीडिंग में ना जाना पड़े, ऊपर से देख के यू गेट टू सी कि ओके दिस एरिया इज कवर्ड हियर. सो जैसा बंसल साहब बता रहे हैं, सर्टेन केसेस इफ यू विल गो इनटू द बेयर एक्ट और द फाइन रीडिंग, you will find certain conditions जिन conditions में या जिन cases में you can go to appeal. So just wanted to add on to your point for Sidhu Ramlu sir, that these are only marginal notes and a hint of what is there inside. No need to go or be boggled much with the heading or the marginal note basically. This is just a hinting area for the reader to, Yeah. The interpretation when there is a, would say, doubt or understanding the provision as well as the marginal note. So then marginal note has the, what to say means dominance, I think. Yes, RS. See, what I was thinking about, just I'd like to share with all of you. How do we cover this AoR exam? Let us start from scratch and let us discuss into the very different manner. I was talking about this. First part is the strategy. Everyone has in our hand question to question, point to point. Without a strategy, you are in a haphazard manner. Always on risk. Ajay ji, sahi baat hai na? Another is the accuracy. Without accuracy, you are always and total confused. Full control on accuracy. Whatever we will read, we will with complete clarity. That means the accuracy. No error in application of that particular. And third is the speed. Just give me 1 minute. 1 minute. Hello. So the point is, speed means what? The time related. Speed is concerned to the time, and you have to perform during the exam, and well within the time you need to perform. Now come to the another part. Another part is
This is the consistent routine and habits. Have you developed for the purpose of strategy, accuracy, and speed? Because these three things always you must have to keep in mind for your overall testing, three-dimensional testing. Strategically, if you are reading something with accuracy and come out with the accuracy and speed, at least for accuracy, in habitual part, do you think it will contribute a lot? Do you think? So this is the basic part you have to be go on. Another the important part is the focus on a particular unit. For example, right now we have discussed what? Regarding criminal appeal before the Supreme. And rest would be the SLP. So the strategy was we need to develop a comparison between these three things. We need to clear all the things regarding this particular part. So what we did, we strategically compare both the part, all the three part available, but not completed the entire thing. Does only three are criminal part which is available for the appeal? The answer is no, there is more. और वो है जब आप देखेंगे ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सॉरी हैंडबुक, हैंडबुक में एक दो और इंसर्टेड टेररिस्ट एक्ट और ये यदि इफ यू रिमेम्बर, तो एक्यूरेसी पे वहां लेकर के जाएंगे कि ये स्टैट्यूट्स में हो गए, आइदर इट वुड बी सेक्शन 2 ऑफ द एनलार्जमेंट एक्ट और इट वुड बी सीआरपीसी या टेररिस्ट एक्ट. ये सारे स्टैट्यूट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक जो अपील अलाउ करता है. So all appeal exhaustively are closed. Then what left? Left is only SLP. अब आपको ड्राफ्टिंग के समय में भी या किसी क्वेश्चन को आंसर करने में भी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा with complete clarity. So the accuracy part would be there. So you are able to take a decision appropriately in a particular situation. So always keep in mind. And once you decided during the exam within 2 minutes, फैक्ट जैसे ही आपने पढ़ा आपको पता चल जाएगा कि ये अपील जाना है या एसएलपी जाना है, यदि अपील जाना है तो किस सेक्शन में जाना है. ये सब कुछ आपके बैकग्राउंड में चल रहा होता है और ये कहीं सिलेबस का हिस्सा नहीं है. और यकीन मानिए इसके बगैर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे. और जहां आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए फिर तो आपका आधा घंटा कहीं नहीं गया. नॉट ओनली हाफ एन आवर, sometimes more than 1.5 hours. क्योंकि आप पूरा लिख लेंगे, ड्राफ्टिंग पूरी तैयार कर लेंगे, देन यू विल रियलाइज कि नहीं ये नहीं है, कट करके फिर से वापस फ्रेश राइट करेंगे. दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ कंफ्यूजन एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कंफ्यूजन. If you are able to block all the confusion part or seal all the confusion part in a fraction of time, अब पहले ही से वो सारा सोच लीजिए जैसा हमने अभी सोचा है, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा. और 2-3 वर्ड है, इसको जब आप लिखेंगे ना तो बड़ा ध्यान से, एक्विटल, रिवर्सल, बहुत सारी चीजों की एनालिसिस हुई, डीप एनालिसिस हुई है. इन सारे शब्दों को यूज करते हुए ना आप केयरफुली यूज करेंगे इसका. एब्रप्ट ऑन अपील और ऑन विड्रॉन ऑफ ट्रायल वी डिस्कस नाउ. और जितना हमने डिस्कस किया इसके अलावा और कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं. इज देयर लेफ्ट एनीथिंग? So it's a part of mind.
नो नीड ऑफ टेक अ पेन पेपर एनीथिंग, एक बार आप सोच करके ब्रेन में ऑर्गेनाइज कर लो, थिंग्स आर डन. So we focused on appeal, not SLP right now, on appeal. So the supplementary part is this: whatever is not coming into the appeal, they will come into the SLP. My mind is convinced on that line. Because without provision, appeal cannot. Once appeal provision is available, we can come through appeal. Otherwise, SLP. Simple line. And I'm fully convinced. Right? So this is the targeted unit. It may be review. It may be curative before the Supreme Court. Same sort of analysis, same sort of comparison, same sort of confusing part. We'll discuss and remove it and lock it and keep it in our mind. And that's done. No need to go again and again and again. Now, the only thing would be left is the speed, which may come through the practice and only practice. For the recalling of memory. Now, which is coming through the third line, complete control over constraints. What does it mean, constraints? Constraints is concerned to, this is comes through the scientific world, even in science. All types of conditions available into them. That is called the constraints. For example, I'm just coming to this particular part, and that part is the, say it's a constitutional part. So what is that condition? So let us examine the conditions. What I'm going to do, I'm keeping in mind and just select all the conditions. Whatever condition is there, but only focus on the condition, nothing else. In all the three sections, what is the condition? And appeal. This is the condition. Is this the condition? No, it's a jurisdiction. And appeal shall, the word is the shall. We should not leave it. And there should be may, but may is not there. May create confusion, discretion. Now this is complete clarity. The appeal shall lie to the Supreme Court. So this phrase from here to here is complete clear. Condition is started from this portion, from any judgment. Very clear. If there any judgment, it is there. One condition fulfilled. Final order or sentence. So we need to read this phrase from here to here, which is broken into the three segments by way of this word or, which itself suggests either it may be judgment, final order, or sentence. Anyone. If there was and, all three must have to be there, isn't it? So it may be from any judgment, final order, or sentence. Sometimes what is happening, we are not challenging conviction. कन्विक्शन ठीक है, मान लिया मैंने गलती की, लेकिन जितना सेंटेंस आपने अवॉइड किया है वो कम कर दो. लाइफ है, उसको 10 साल 14 साल में कन्वर्ट कर दो. ये कुछ ज्यादा हो गया, एक्सट्रीम सेंटेंस मिल गया. दिस इज ऑल्सो हैपनिंग हियर. सेंटेंस नहीं, मुझे कई बार सेंटेंस ही चैलेंज होता. स्मार्ट मूव ये है कि सेंटेंस, अब कई बार ऐसा होता है 10 साल की सजा है,
और 15 साल 9 साल वो जेल में रह चुका है। कोर्ट ये कहती है कि चलो कन्विक्शन इज ओके, हम ये नहीं करें कि गिल्टी नहीं था, लेकिन जितना सजा हो गया उसको कंप्लीट मान के इसको अभी से छोड़ दिया जाए। सेंटेंस इज वेव्ड ऑफ। So sometimes judgment, sometimes final order, sometimes sentence, sometimes combination of these two is being challenged. So the condition is what? Constraint. First constraint is what? The first constraint is where the appeal shall lie. Appeal shall lie to the Supreme Court. First constraint. Not other tribunal, not other high court. क्योंकि यदि मैं सुप्रीम कोर्ट को यहाँ छोड़ दूं और फिर इसको मैं पढ़ने लगूं तो किसी भी हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल में ट्रेवल कर जाऊंगा इस प्रोविजन को लेकर, isn't it? So this is the one condition, appeal shall lie to this court only, that is the Supreme Court. Second, from any judgment, final order or sentence from anyone or in a criminal proceeding, not the writ, not the civil, not the quasi-criminal, but in a criminal proceedings of a high court, not a tribunal. So the another condition is in a criminal proceedings of a high court. Which high court? So any high court in the territory of India. This is the one set of prima facie jurisdictional type of condition. Now the contained type of condition we are in. So another layer of condition is being started by A, B, and C, which is mapping on this. So once this is fulfilled, then we will enter into either A or B or C because of this or. And which comes to the facts itself, and case to case it may differ. Is there on appeal? High Court set it on appeal? Or High Court has withdrawn for trial before itself? So next checkpoint is this one. And third checkpoint is, or the certificate under Article 134. Anyone can fulfill. Concurrently, all the three cannot be happened. It would be. No. So whoever would be, it would be the fixed line. Or anyone cannot be. Am I right or wrong? Getting my point? Is there any confusion? Please come. So on appeal, and another condition is reverse an order of acquittal. If this is coming in this particular part A, then now I am entering into the A only. So has on appeal. So the first condition is appellate provision. Then reversed, another condition, and the third condition is what is the reverse? Order of acquittal, not order of conviction. This is order of acquittal specifically and properly mentioned, not conviction. Conviction है तो ये नहीं लगे. Of an accused person, anyone accused, कोई भी एक accused. Set of accused है, doesn't matter, किसी एक का, जिसका है उसकी अपील लेकर आए, बाकी सारे का उसके नीचे कर लेंगे. And accused persons, and other condition is also, so here to here, यहां से यहां तक एक ही है, connected with and. पहला पार्ट ये कहता है कि an order of acquittal of an accused person which is reversed. So from here to here, first part. And second part says and sentence him to death. तो रिवर्स किया और डेथ नहीं दिया तो ये नहीं लगेगा. रिवर्स है but not necessarily it would be death. Once this is reversed and awarded death, then this provision will invoke. So how many conditions layer are there? First condition is this: an appeal shall lie to the Supreme Court. This is the final. When?
The condition is started from there, from any judgment order. So interim order is not there. So किसी भी interim order को लेकर के आप नहीं आ सकते. फाइनल नेचर का होना चाहिए या जजमेंट होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए. हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए. टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर पाकिस्तान का हाई कोर्ट या बांग्लादेश का हाई कोर्ट इज नॉट एक्सेप्टेड. नाउ if the high court has on appeal, another condition, high court must be cited into the appeal. Reversed an order of acquittal, so another is the reversal. So on appeal, tag word is then appeal. Another is the reversed. Third is the acquittal, and fourth is death. ये चारों जब मैच कर जाएगा तब ये प्रोविजन. अदरवाइज दूसरा होगा हाई कोर्ट हैज विड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ. इसको यहां से यहां तक पूरा पढ़ना पड़ेगा. कहां से? इटसेल्फ, एनी केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी एंड हैज इन सच ट्रायल convicted the accused person. So conviction is there, right? Trial is conducted, then वहीं पे conviction होगा and sentence him to death. So these are the conditions. Trial before withdrawn, one word. Before High Court, and trial, convicted, and death. These are the sequence. और यदि सर्टिफिकेट है, then certificate under Article 135(4)(a), the case is fit one for appeal to the Supreme Court. So by way of this, the another sort of, jurisdiction is being created for that particular appeal by way of certificate under this affirming. मैं ज्यादा नहीं जा रहा, इसके नीचे भी नहीं जा रहा. So my point is this: do we complete control on conditions? Third column, strategically we set in our mind. This is the strategy कि as and when required we will recall our condition. How do we do that? Close our eyes and set in mind, यदि ये कंडीशन होगा तो इधर जाना है. रिवर्स करते हैं ना. अभी तो वो कंडीशन सेट किया, आपके पास हाई कोर्ट पे आएगा एक ऑर्डर और कह रहा है कि मुझे तो 7 साल का पनिशमेंट हुआ. किसने भाई पनिशमेंट दिया? ट्रायल कोर्ट ने दे दिया. हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट उसको कंफर्म रखा है. कहाँ जाएगा ये? सीधा एसएलपी जाएगा. अच्छा, इन सारे कंडीशंस को कितने तरीके से कंबाइन किया जा सकता है? भाई साहब, जितना कंडीशन है उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन डेवलप करेंगे, हद से ज्यादा हो जाएगा. और एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड इनटू द एग्जामिनेशन फॉर टेस्टिंग यू. So unless until this accuracy and clarity in mind is not there, no one can answer this part. So बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत बाद में है. पहले इस चीज को दिमाग में सेट करने की जरूरत है कि how do we take a correct decision on a correct place. So it is not concerned about the text centric. This is concerned about our understanding centric. Are you convinced with this logic? Indu, Sir, trial court life imprisonment, high court death, then SLP or appeal? आप बताइए अब. Now my turn is over. Now apply your mind. कहाँ फिट होता है? यानी ट्रायल कोर्ट ये लाइफ imprisonment और हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस तो SLP. एग्जैक्टली SLP. बिल्कुल सही बात है. कंफ्यूजन और डर नहीं होनी चाहिए. बस कंडीशन मैच किया, डिसीजन क्लियर है. ट्रायल कोर्ट डेथ, हाई कोर्ट डेथ, देन SLP. SLP बिल्कुल SLP.
कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप जरा देखिए इसको, यदि इस तरह से हम दिमाग यहाँ नहीं लगाएं इस पॉइंट पे, तो एग्जामिनेशन हॉल में 100 कंफ्यूजन, क्योंकि लोगों को ये लगेगा, जैसे अभी दूसरा केस नाथ साहब ने बताया कि हाई कोर्ट डेथ, सॉरी ट्रायल कोर्ट डेथ, हाई कोर्ट डेथ, क्या होगा? अपील होगा? SLP दिमाग में चलेगा कि भैया डेथ है तो यहाँ अपील होना चाहिए, नो अपील। एग्जामिनर वहीं पकड़ के कूटेगा यदि आपने उसको अपील बना दिया तो। देखिए लड़का कुछ नहीं जानता है, किस प्रोविजन में अपील लेकर के हमने बिना प्रोविजन के अपने मन से अपील जुरिडिक्शन क्रिएट कर दिया, और जबकि एक्सट्रीम सीरियस है, डेथ वाला कंडीशन। अब वो लोग जबरदस्ती उसको ढूंढेगा कि 379 में ले या इसमें ले, उस 379 भी और ऑन अपील रिवर्सल की बात कहता है, वो भी नहीं अप्लाई हो रहा है। That's the clarity required in our mind. That's what I put at this table. It is not confined to the appeal, even the original jurisdiction, even the appellate jurisdiction, even for the यदि appellate jurisdiction की हम बात करें, यदि हम फोकस पॉइंट को appellate jurisdiction बनाए, दो तरीका है, या तो हम फोकस पॉइंट को डायरेक्टली appellate jurisdiction बनाए, या appellate jurisdiction को हम 3-4 पार्ट में ब्रेक कर दें। पहले हम क्रिमिनल ले लेते हैं, फिर सिविल ले लेंगे, फिर हम रेट ले लेंगे, फिर कंपनी लॉ ले लेंगे, बट पहले हम सिविल लेते हैं। सिविल में जो अपील यहाँ आ रहा है, अपील का नेचर अलग अलग सेक्शन से आ रहा है, इसको लिए उसको लिए उसको लिए, मैंने 2-3 को पहले सेक्शन 2 ऑफ द इनलार्जमेंट एक्ट और उसके बाद आर्टिकल 134 लिए, इन दोनों को कंपेयर कर लिए, क्लियरिटी ले ली। अब बंसल साहब ने 379 भी इंसर्ट किया, तो चलो उसके साथ भी एक्सरसाइज कर लिया, मजा आएगा, क्योंकि पहले किया हुआ है तो एक्सटेंड करने में मजा आएगा। सो द सीक्वेंस इज दिस कि पहले एक लें, फिर दूसरा लें, अब फिर दोनों को कंपेयर करें, फिर तीसरा लें और तीसरे को भी उसमें इंसर्ट करें, तो एक ट्री बनना शुरू हो जाए। फिर जितने भी एपलेट पोर्शन है वो आ जाएंगे क्रिमिनल। वही काम अब हम सिविल में करने जाएंगे। सेक्शन 131 एंड 132 में ह्यूज डिफरेंस है। 131 इज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, 132 एंड 133 में भी ह्यूज जुरिडिक्शन है। 131 इज कन्फाइंड टू सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट के लिए रिजर्व है, आइदर इट में भी सिविल और क्रिमिनल। बट 132 एंड 133 सॉरी 133 and 134 are specifically allotted to the civil and criminal for general importance. फिर उसको कंबाइन करने में मजा आएगा। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल ग्रोथ एंड सेटिंग इन माइंड कि इसके अलावा और कुछ नहीं। या तो आप बैठ करके सोच ले, डिस्कस कर ले, एनालाइज कर ले, देन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आज के डेट में मुझे लगता है नाथ साहब को यदि किसी भी तरीके का सवाल दे दिया जाए कि यहाँ अपील होगा या एसएलपी क्रिमिनल में, they will answer very appropriately. Am I right or wrong, sir? Right, sir. Right. सर एक और व्यवधान है। व्यवधान बाद में देखेंगे, बट अभी जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ उसको मैं कर लूं। जो मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है उसको जरा समझा लूं। How important this thing. So once you will apply, जैसे नाथ साहब ने 2 कंडीशन क्रिएट करके दिया और उन्होंने ही आंसर दिया कि यस इट्स एसएलपी। दिस कम्स इनटू द स्पीड, एक्यूरेसी। सो कॉन्फिडेंस आपको इन दोनों खाली कॉलम में ही समझ में आएगा। सो दिस इज द वे वी आर कंट्रोलिंग द थिंग, बट दिस इज द नेसेसरी इंग्रेडिएंट, बट दिस इज नॉट द सफिशिएंट। कंप्लीटनेस के लिए इसके सप्लीमेंट को मैं थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, और वो सप्लीमेंट है ये। The point is written here, the 5 steps always keep in mind. हमेशा आपको ये 5 स्टेप्स माइंड में रखने हैं, which is here. नोट के अंदर क्लैरिटी, कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीटनेस।
लेट अस अप्लाई इनटू दिस पार्ट जो हमने अभी देखा है. Now we are asking questions from ourselves. Do we are clear on this point? Clarity in mind or little bit confusion? आप कहेंगे कि नहीं, मुझे खुद से किताब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ब्रेन में सेट करना पड़ेगा, आंख बंद करके रिकॉल करना पड़ेगा, तब वो क्लियरिटी. बट इतना मंथन हो चुका है कि कंफ्यूजन नहीं रहा है. तो उसके बाद भी कंफ्यूजन था और नाथ साहब ने 2 सवाल पूछ करके अपने आप को कंफर्म कर लिया. नाउ दे आर कॉन्फिडेंट कि दे विल अप्लाई एवरीवेयर. यदि वो 2 सवाल नहीं पूछा होता, अगेन दे वर लैकिंग इनटू द कॉन्फिडेंस. एम आई राइट और रॉन्ग, नाथ साहब? जी सर, जी सर. So this is the confirmation that you are confident. Now this is completed the chain. Concerned to this particular part only. इसके स्कोप को आप बढ़ाइए, अदर स्टैट्यूटरी अपील को लेकर के आइए, और कंप्लीट तब होगा जब सारे स्टैट्यूटरी क्रिमिनल अपील आप इसको देख लेंगे और सबके कंडीशन को एनालाइज कर लेंगे. ऑफ कोर्स ये कंप्लीटनेस यूनिट वाइज भी होता है. इवन यदि एक को देखे तो वहां भी कंप्लीट फीलिंग हम लोग ले सकते हैं. बट टू द आंसर इनटू द ड्राफ्टिंग क्वेश्चंस और अदरवाइज एक कंप्लीट पिक्चर आपको एक सेगमेंट क्रिमिनल अपील का साइड करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा. फिर सवाल ये आएगा कि उसको लिखेंगे कैसे अपील. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट वुड बी द ड्राफ्टिंग फॉर अपील. क्या सर्टिफिकेट होगा? क्या ग्राउंड होंगे? कितने पैराग्राफ फिक्स होंगे? सो एन नंबर ऑफ क्वेश्चन विल कम इनटू योर माइंड. एनेक्सर का हम मार्क करेंगे. और वो सारी क्लैरिटी जब आपके पास आ जाए, तब लिमिटेशन जो सारी क्लैरिटी आपको सुप्रीम कोर्ट रूल से मिलनी है. उसके बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि यदि क्वेश्चन मिला तो क्वेश्चन में कौन सा पैराग्राफ से क्या पिक करना है, कहां फोकस करना है और कहां फोकस नहीं करना है. Then you will feel the first line clarity, confusion, confidence and completeness. स्कोप को बढ़ाइए, उसको कंप्लीट कीजिए. Now next another part. बंसल साहब, another part is always connect with the source, objective, ingredient, constraint and limitation analysis. SOI CLA. Source, objective, ingredient, this is the SOI. Constraint and limitations, CL analysis. SOI CL भी कह सकते हैं, एक को आप छोड़ भी सकते हैं. SOI CL प्रोसेस आपको चलाना ही पड़ेगा. What I did today on all these parameters, it was the source, objective, ingredient, constraint and limitations analysis. Are you convinced with that? इसको सोशल भी बना सकते हैं सर. SOCIL, yes, सोशल. it's a social. बट वो सीक्वेंस बिगड़ेगा और हम सीक्वेंस को बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सोर्स में देखिए क्यों जरूरत है ये आप जरा समझिए. आर्टिकल 134 में आप जाना चाह रहे हैं, इट इज द सोर्स. या सेक्शन 2 ऑफ द इनलार्जमेंट एक्ट, इट इज द सोर्स. और 379 ऑफ द CrPC. सबके इंग्रेडिएंट को हमने चेक किया, ऑन विड्रॉल, ऑन अपील, रिवर्सल, हर इंग्रेडिएंट को फ्रॉम हाई कोर्ट एंड अदरवाइज, और सारे कंडीशंस को हमने सेट किया. So these are the constraints, these are the constraints. यहाँ नहीं तो वो नहीं, मतलब इंटरिम ऑर्डर नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता और ये हो सकता. Then finally limitations and then analysis. Otherwise it go to the SLP. यदि इस पॉइंट को आप भूल जाते हैं
then you are incomplete. Completeness की feeling इसके बाद ही आने वाली. Again, preparation is not completed. And next work, which is attributed to your confidence, is that आप क्या कीजिए, क्रिमिनल अपील से रिलेटेड पेपर 1 में कितने सवाल आए, सारे साल के सवाल को आप उठाइए जो आपके इस पॉइंट से मैच करता. क्वेश्चन है वहां, आंसर नहीं है, और क्वेश्चन को देखिए और मुस्कुराइए. या फिर परेशान हुई है, फिर दोबारा पढ़िए. सो समथिंग इज रॉन्ग और राइट, टेस्ट योरसेल्फ. और सारे सवाल जब आप गैदर करेंगे, कुछ सवाल बनेगा, मतलब आपको मुस्कुराने का मौका मिलेगा. इवन इन ड्राफ्टिंग, ये वो स्टेज है जिस स्टेज को यदि आप पार कर गए ना, और ये एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज को आपने कर लिया ना, you must will gain proper confidence, proper clarity, proper completeness, and without any confusion. यकीन मानिए, ये तीसरा स्टेज पहुंच ही नहीं पाते हैं, एग्जाम आ जाता है. और यकीन मानिए, फोकस पॉइंट यदि आप गैदर करेंगे ना, 10 से ज्यादा फोकस पॉइंट नहीं. इवन जुरिडिक्शन वाइज आप ब्रेक कर लें, एटलीस्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. इवन ड्राफ्ट सारे पेपर में 10 से ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा. हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, पेपर 1 की बात मैं बता रहा हूँ. 136 रिव्यू, क्यूरेटिव, टीपी, रेट एंड पीआई. कितने पॉइंट हुए? ये 5. इस 5 पॉइंट पे कितने मार्क्स कवर होंगे? If you have a complete clear and did with this, कितने मार्क्स क्लियर होंगे? मुझे नहीं लगता कि 90 से कम कवर हो पाएगा. 80 तो कहीं नहीं गया. सिर्फ इतना ही 5 पॉइंट. क्या क्या बोला हमने? रेट बोला, एनपीआईएल उसके अंदर ही आता है. ओरिजिनल जुरिडिक्शन 136, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे एप्लाइड जुरिडिक्शन 136. उसके बाद टीपी, रिव्यू एंड क्यूरेटिव. यही 5 बोला ना हमने. इम्पैक्ट देखिए, पेपर 1 पे 80 मार्क्स और पेपर 2 में 100% मार्क्स. 180 मार्क्स की कवरेज यहीं से निकल करके आती है. चलिए थोड़ा और 5 को 10 कर लेते हैं. एसएलपी को एसएलपी सिविल और एसएलपी क्रिमिनल कर लेते हैं. रिट को सिविल एंड क्रिमिनल में बाइफरगेट कर लेते हैं, थोड़ा फॉर द सेक ऑफ इजीनेस. ड्राफ्टिंग में थोड़ा और इंटर करना चाहते हैं तो रिप्लाई पे भी आ जाते हैं, और एप्लीकेशन पे भी आ जाते हैं. कुल मिलाकर के 20-25 पॉइंट से ज्यादा नहीं इमर्ज करेंगे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर करने के लिए. और सबके लिए टेस्टिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है. जब वो टेस्ट हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सवाल आप लिख लेंगे, तब आप आइए डब्ल्यूटीओ पे. थर्ड, फोर्थ,
एंड WTO इज वर्ड एंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन। कितने वर्ड आपको लिखने हैं, किसको हटाना है, किसको नहीं लिखना है, टाइम सेव करने के लिए, मीनिंग बिना डिस्टॉर्ट किए हुए कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, दैट इज द WTO। So TQA, which is the targeted questions attempt from previous year question papers, and WTO, दोनों चीज बचा हुआ है और दोनों स्टेज लेवल अप है। यदि और ये पॉइंट वाइज पॉसिबल है, ये नहीं है कि पूरा कीजिएगा उसके बाद, और जब वो पूरा हो जाए तब आप अगले पॉइंट को डिस्कस कीजिए, और वो है पॉइंट नंबर 5, रियल टाइम एनवायरनमेंट प्रैक्टिस। 3 घंटा बैठिए, पेपर लीजिए, एक सप्ताह में 4 दिन 4 पेपर दीजिए, 3-3 घंटे बैठ करके। अब बाकी 2 दिन अपने ही कॉपी को इवेलुएट कीजिए और ऊपर वाले WTO पॉइंट पे उसको ऑप्टिमाइज कीजिए। दैट्स द वे ऑफ प्रिपरेशन, अदरवाइज मुश्किल। और इस तरह से यदि कर लिया किसी भी पॉइंट पे, 5 स्टेप्स ऑलवेज कीप इन माइंड, वो दिमाग में आ गया और उसको एक्सरसाइज हमने कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, देन नथिंग वुड बी लेफ्ट। उसके आगे एक और टेबल हमने बनाया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो एंटायर एडजुडिकेशन प्रोसेस का ही दूसरा नाम है, और उसका सबसेट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हम हमेशा कोर्ट में ही नहीं, अपने घर में भी करते हैं और अपने माइंड में भी करते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर्ड पार्ट है जो कोर्ट में जाता है, और बहुत ह्यूज पार्ट 90% बाहर ही रह जाता है, वो कोर्ट में आ भी नहीं पाता, बट समवेयर डिससेटिस्फेक्शन और कंफ्लिक्ट में रहता है। बट कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस है जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसको DMP कहते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड दूसरा है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। So whatever is the decision, it might be without based on without reasoning, which is called manifestly arbitrary, but somewhere certain logic are there, bases are there, nexus are there, but it is not connected, kahin se kahin connect kiye ja rahe hain, that is called arbitrary reasoning, no nexus with the objective। और इनकम्प्लीट रीजनिंग, आधा इधर से दे रहे हैं, जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था 18 आउट ऑफ 20, इट कांट बी नॉर्मली, राइट। बट हमने उसको जब प्रॉपरली एग्जामिन किया तो पता चला कि 18 आउट ऑफ 20 नहीं है, दरअसल वो 10,000 और लाख आउट ऑफ 20, जो यहाँ दिख रहा है 18 आउट ऑफ 20। So that's what the incompleteness and completeness. In part and overall. Even reasoning may be excessive, may be shortest, that is called incomplete or excessive. Sub silencio or obiter dicta or even blah blah, जो भी 4-5 terms हैं. And one segment is the very few, but one segment is the optimized and proper reasoning, which sustains longer. So always we are trying to develop an optimized and proper reasoning, OPR. And something is literally left which is pertinent to be on record, that is called on the point of fact, which is the perverse finding and perversity. So ये 5 रीजनिंग पे यदि किसी ने फोकस कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में दीज आर द वर्किंग।
ये टेस्ट जो है ना आपको हर जगह पे दिखाएगा. So this is the part which is required to discuss. So this is in 3 segments. Let me just do that part. One is the table, strategic table, point wise. Another is the 5 steps, always keep in mind. And third is the conflict resolution process, especially regard to the decision making process. और उसके लिए basis है reasoning, and the quality of reasoning is written there, which itself convert into either it is proper or only decision making process, improper decision making process and proper decision making process. So improper is IM DMP, or either is the proper means PR DMP. I guess I explain all these things. Now on the basis of that, I tried to attempt to quantify the most terrible paper, which is the leading cases. How it would be consolidated and be discussed. So overall, I attempted certain things under the head. That 10 heads I extracted: the basic structure doctrine, independence of judiciary, independence of tribunalization, federalism, separation of powers, and 10th schedule, 9th schedule, election law jurisprudence, service law jurisprudence, doctrine of judicial review, Article 142 to do complete justice, extraordinary, this is for the review and curative, and extraordinary jurisdictional and power. So यदि मैं फंडामेंटल राइट पे जाऊं तो इतने सारे आर्टिकल्स के अलग अलग सेगमेंट्स बनते हैं. So how many times is required? एक पार्ट आप देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल किसी भी इश्यूज के लिए हम यदि लें डिबेट अपने ब्रेन में रखें तो कौन सा पॉइंट नोट करवाएंगे? द पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ही ले लेते हैं. व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड वेयर डिड इट केम? कहां से आया? इसका डीएनए कहां से बिलोंग्स करता है? issued in भारती से. जी नहीं, इट्स डीएनए इज कमिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. So Kesvananda Bharati is a case. Yes. Anything by a case can you insert into the constitution? Can you limitize to the constitution? It is the limit on the constitutional provision. Another is, what is its impact on the stakeholders like legislator, government, judiciary, and citizen? How it was evolved? How much time taken? What was the sources? वगैरह वगैरह. लोकेशन मैपिंग ऑन द लीडिंग केसेस की कैसे कैसे ये चेंज हुआ है. एंड क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स, एप्लीकेशंस, पोजीशंस, confusions if any, and then you can feel the feeling of completeness. We can respond all these things. So once I'll pick up any point and discuss, we will go through all these things without reminding you this piece to you. So now this is your duty to keep in mind all these things regarding the procedural part which is contained into this particular page. तो मैं कौन सा पेज शेयर करूं आपके साथ, पहला या तीनों? तीनों तीनों. तो लास्ट वाला तो एक्सरसाइज ही है ना. सर तीनों भी पिच सर. But be remember, every time I will ask it. आज का एक्सरसाइज कैसा रहा? I done for the day?
यस सर। अब एक चीज रह जाती है। यस सर। अब क्या रह जाती है भाई? 379 में सिद्धारमलू साहब ने क्वेश्चन किया था, इन सर्टेन केसेस, जो अपना मार्जिनल नोट्स है ना, इन सर्टेन केसेस, वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर आप कह देंगे तो वो ज्यादा। व्हाट इज दिस सर्टेन केसेस? आई डिडंट गेट यू। ही सेइंग दैट, यस बोलिए, आप बोलिए, सिद्धि साहब बोलिए। No, nothing, sir, nothing. Actually, in section 379, the head note starts with the certain cases, in certain cases, whereas in section 2 of criminal enlargement and 134, there is no question of certain cases. So now we got that certain cases means here only death penalty, life imprisonment and 10 years. See, आज के डिस्कशन में जो पार्ट हुआ है, Very आप nice. लोग यदि अप्रिशिएट करें तो 2 पार्ट में हुआ है। एक तो पहले डेमोन्स्ट्रेशन कंपैरिजन ऑन डिमांड, नाउ इट वाज मैप्ड, स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे उसको मैप किया जाए, वो सेकंड पार्ट था। Yes sir, the beauty here is that in section 2 अब enlargement, आप जरा ये देखिए, इसी पार्ट को रिवर्स यदि करें, क्योंकि अब तो इस टेबल की बातें आपको समझ में आ गई है कि ये क्या है और कैसे अप्रोच होना चाहिए। मैं बड़ा मुश्किल से एक पेज लिख पाता हूं, मतलब महीनों लग जाते हैं मुझे लिखने में, बट आई गेस कि इट विल वर्क। और इस तरह से स्ट्रक्चर करके चलें तो एक कंप्लीट सेंस ऑफ फीलिंग आएगा। ऑफ कोर्स ये कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। तो क्या मैं अभी इसको रिलीज करूं या आफ्टर डेवलपमेंट? I'll take a 10 to 15 days again to develop it. इसको रिलीज तो कर लो, क्योंकि बिकॉज विल गो थ्रू दिस। ऐसे मत करो कि वो तो आप करते हो, फिर बाद में हमको भी क्लैरिटी आ जाएगी हमको क्या सुनना है। हाँ, ये होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। It is a fundamental of मतलब learning. after the experience of all these things, not only in this group, even the evening group, supplementary group is going on, डॉक्टर साहब भी चला रहे हैं। I realize कि ये structured pattern पे यदि वहां चले, it's not डॉक्टर साहब चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं, वहां कोऑर्डिनेट डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो उस ग्रुप में यदि इस तरीके से आप लोग चलें तो सब्सटेंटिवली एक अच्छा खासा डेवलपमेंट आ जाएगा। इवन लीडिंग केस में यदि 142 वाला पोर्शन लें, विच इज कंसर्न टू द क्यूरेटिव एक्स डिविटियो जस्टिसिया, उसमें 2 केसेस तो साथ साथ आ ही जाते हैं, रूपासो का हो रहा और यारंतो, और यही दोनों जगहों पे, और ये दोनों इतना पर्टिनेंट है कि सवाल इससे छोड़ा नहीं जा सकता है। किसी न किसी सूरत में एक सवाल इंसर्ट किया ही जाएगा। सो द टारगेटेड एंड मोस्ट सेंसेबल पोर्शन को पहले आप टारगेट कर लीजिए, जहां पर आतंकवादी के कैंप होने की संभावना है। तो ये पता तो आपके इंटेलिजेंस से आपको ही लगेगा, और उसको सील करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यदि पूरे बॉर्डर लाइन को हम सील करने लग जाएं तो उतना रिसोर्स नहीं। वी मस्ट बी समथिंग स्मार्ट। 160 करोड़ की आबादी है, तो शॉर्टलिस्टिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है, टारगेटिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है। So you need to go through it smartly, confidently, properly. क्यों प्रकाश जी, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, बट ये जो तीनों है ना, 134 इनलार्जमेंट और ये 379, ये ऐसे निकल के भाग जाते हैं। टारगेट तो किया सर, और अजहर महमूद निकल के भाग गया सर, पूरी फैमिली मर गई। अरे सर, वो एक बार सक्सेस हो जाएगा, लेकिन आप एज ए नेशन है सर, बार बार थोड़ी उसको सक्सेस होने देंगे। आप तो इंडिया हैं, इंडियन आर्मी है,
एक बार कोई भले ही सक्सेसफुल है, गलतियां हर से होती है, मौका हर को मिलता है, शायद वो ले ले, लेकिन उसके बाद जो आप सील करेंगे तो फिर तो जिंदगी में उसको कभी मौका देखे ही नहीं। भारत महान देश है सर। क्या ओम प्रकाश जी? एकदम बढ़िया सर, सही बोला आपने सर। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट जनरली कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सर जो डेथ सेंटेंस है ये 3 जज के पास जाता है, तो 2 जज कंप्लीट नहीं है क्या हर करने के लिए? नहीं, कॉम्पिटेंसी जो है ना, कॉम्पिटेंसी लॉ से निकल करके आता है। जब हमने डिसमिस ही खुद करना अपने है, 3 जज क्या नेसेसरी है? फिर तो बात वही हो गई कि फिर 11 जज मिलकर क्या करेंगे? 13 जज मिलकर के क्या किया? सर इशू इन्वॉल्व मेरा सफिशिएंट। जुडिशियल माइंड एक्सरसाइज कर रहा है ना सर, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल माइंड। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच, 2 जजेस बेंच ऑब्वियस चीज है, 3 जजेस बेंच स्पेशल बेंच होती है, 5 जजेस बेंच एंड ऑनवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेंच के स्ट्रेंथ को लेकर के एक इवन कोर्ट लेवल की हायरार्की आ जाती है। इंट्रा कोर्ट अपील जो होता है, सिंगल जज एंड डबल जज, तो 2 माइंड जब वहां एक्सरसाइज करता है तो मोर रिफाइंड कहा जाता है प्रॉपर। इसमें 3 जजेस वाले में आप खुद सोचिए और मुझे बताइए ऑन द लाइन ऑफ टेबल, जो टेबल डेवलप करके दिया था, पहले आप इसी पॉइंट को उस टेबल पे फिट कीजिए नाथ साहब। जी सर, जी सर, जी सर। और फिर आप हम लोगों को इनलाइटन कीजिए उस पर जो फाइंडिंग आएगी, मतलब समुद्र मंथन कीजिए और जो अमृत मिलेगा वो ला करके हम लोगों को बांटिए। विष की बात मैं नहीं कर रहा। एनीवन, एनी क्वेश्चन? सिद्धू सर कुछ बोल रहे थे सर। आई वांट टू अनवरत प्रतिदिन अध्ययन केंद्र। हाँ सिद्धि सर प्लीज। Nice sir, nice session. Nothing, but only here section 2 में और 134 में starting words होता है appeal shall lie, whereas in section 379 में ending word होता है he may appeal. Correct. So that is the difference. Nothing. And he may appeal, and death penalty is section 134, article 134 में है, इधर 379 में है, उधर डेथ का क्वेश्चन नहीं आता है सेक्शन 2 में. So ultimately, if you will talk about or keep in mind the objective. Yes sir, yes sir. It's very clear, without any confusion. Good sir, good. That's it. Consequential, sequential appeal means anyone can avail that. But thing is that, as sir rightly said, that constitution prevails over the statutory provision. That is important. Shivani ma'am. Yes sir. Any comment on the table or otherwise today's exercise? Sir, today's exercise was expansion of mind. ये हमने टॉपिक पहले भी किया था, but we never approached it like this. Your starting words were an eye opener कि आप देखिए कि ये कैसे, मतलब what came first and what followed. That was not our approach at all. So हम लोग तो circles में घूमते रहे थे उस discussion में. So this was you know, almost like expansion of mind, how to approach differently, you know, something that is being discussed. So it was an eye-opener, sir. So even we will discuss about, think about the risk by way going through this way, then risk is reduced and the complexity is resolved. Right, sir. So एक certain optimized way है, आज की डेट में कहा जाता है स्टेल्थ, कोई पकड़ भी नहीं पाए, किसी के रडार पे भी आप नहीं आएंगे और 6 मैक्स 7 मैक्स से हिट भी कर जाएंगे, स्पीड भी आ जाता है, यू नो, प्रिसाइसनेस आ जाता है।
तो मैं थोड़ी देर में इसको शेयर कर लेता हूँ। कर लीजिए। एंड आई डन फॉर द जी डे। सर। थैंक यू गीता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई और सवाल या फिर कोई और एनी कमेंट? नथिंग एल्स सर। Ramitra Prasad Yadav, he is seeking to admit into the group right now, and I did, I guess. Yes. Let us leave for the day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Hello, good day, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.